जैसे कि एवरी सैटरडे हम एक स्टॉक पिक करते हैं और उसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि कुछ सीख सके, उनके लिए मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये वीडियो क्रिएट करने का, जो सैटरडे स्टॉक वॉच सीरीज़ जो है हमारी, उसमें से अगर स्टॉक का जो व्यू है अगर वो सही जाता है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज या वीक्स के अंदर तो इट्स गुड, बट अगर रॉन्ग भी जाता है तो डजेंट मैटर, क्योंकि इम्पोर्टेंट इज़ कि आपने जो प्रोसेस सीखा है उसमें जो एनालिसिस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि एवरी एनालिसिस में आपको कुछ नगेट्स ऐसे सीखने को मिले जो आपके अपने एनालिसिस में आपको हेल्प करे। सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ अ स्टॉक वॉच नंबर 33 और हम आज देखेंगे और एक स्टॉक के बारे में डिटेल में। मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल और आज इस वीडियो में हम एक और स्टॉक के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और स्टॉक का जो नाम है वो है IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स देखे हैं प्रीवियसली भी, जहाँ पे कुछ स्टॉक्स ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए, कुछ स्टॉक्स नहीं चले हैं। और लास्ट स्टॉक जो था वो विनती ऑर्गेनिक था, जिसमें हमको अच्छा खासा 10 से 12% का मूव ऑलरेडी देखने को मिला। सो उसमें इम्पोर्टेंट था कि हमने जो एनालिसिस किया वो आप उसमें से सीख पाओ और अपना जो एनालिसिस है उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। सो आज जो स्टॉक है IGL, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि इस स्टॉक के अंदर हमको क्या क्या ऐसे सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो हम एनालिसिस करेंगे वो मेनली जो प्राइस है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हम कंफर्मेशन के लिए उसको ऐड कर सकते हैं, अगर वो नहीं भी किया तो भी वो चलता है, बट कंफर्मेशंस के लिए हम देखेंगे। बट जो इंपॉर्टेंट है वो हम प्राइस एनालिसिस विथ कैंडलस्टिक एनालिसिस हम देखेंगे इसमें डिटेल में कि IGL के चार्ट पे हमको क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्यों हमने इस स्टॉक को एज अ बुलिश स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। सो वो हम देखेंगे। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट में अगर इंडिकेटर काम करते हैं नहीं करते, काफ़ी लोगों को तो ये बहुत डाउट होता है कि इंडिकेटर काम करता है या नहीं करता है। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि इंडिकेटर आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरों के लिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ। अगर आप कोई इंडिकेटर कोई भी यूज़ कर रहे हो, RSI, MACD, स्टोकास्टिक या फिर ADX, VWAP, एनी इंडिकेटर, वो आपके लिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो यू कैन यस टाइप कमेंट सेक्शन में यस लिखिए और बताइए मेरे को कि आपके लिए कौन सा इंडिकेटर वर्क कर रहा है। यस के बाजू में वो इंडिकेटर का नाम लिखिए। अगर नहीं भी कर रहा है तो यू कैन सिंपली से नो। सो वो भी हम देखेंगे। और आज जो एनालिसिस देखेंगे वो प्योरली ज़्यादातर हम फोकस करेंगे प्राइस के ऊपर, और प्राइस हम जो यूज़ करते हैं उसमें कैंडलस्टिक्स को यूज़ करेंगे। सो चलिए देखते हैं IGL का डिटेल में एनालिसिस। लेट्स जंप टू द स्क्रीन। Hello everyone and welcome to the screen. This is the daily chart of IGL Limited and spot price chart, and we have seen stock is in a sideways right now since maybe 1.5 month or maybe 2 months around, from since this August month it has been in a sideways zone. So let's continue and start our analysis with the higher time frame so we can identify the trend of the stock. So converting this to the monthly chart. So monthly chart we are using for long-term analysis and long-term trend. Okay. So recently we have seen this is the September month which just over, and we have seen one shooting star but at declining stage. So we call it is a very good reversal candle here after this down move. So almost this bottom has fixed, the bottom has been sealed here. I have created one video on this kind of candlestick and I will give the link into I button so you can watch that video also, so you can get easily idea about this candlestick pattern also. One more candle is here. We have seen a spinning candle on this August month, which is also a good reversal candle, and this candle also come by the next month, inverted this hammer, or we call shooting star at this moving average support. So almost the bottom is sealed here. So we expect some kind of bounce from this down move, and we have expecting some bounce in this counter. So overall, these are the things, and the candlestick pattern is suggesting some kind of bounce may possible on the longer term time frame.
And if I can add some, this is just the price analysis, but if I can confirm further with the this Fibonacci retracement, it also comes near 50% retracement. Here is a 50% retracement, or here around 374, which is a good sign. And exactly this reversal candle has been placed at the moving average support also, this middle Bollinger Band, and this 50% Fibonacci support. So overall price wise, the reversal is expecting, Fibonacci wise also reversal expecting, and the moving average slope is also supporting, and moving average support is also intact. So there are so many combination of this stock has been suggesting some kind of pullback possible on a monthly time frame. So let's convert to the weekly time frame, which is for medium term horizon. And on a weekly time frame, it's in a sideways, we have seen, but there are so many good shadows on different candles. So starting from September, the second week, the third, fourth, and this is the first week, last week. So for entire September, we have seen a good weeks. Means there are so many shadows on different candles here. So which is more suggesting the support is intact at this area around 370, 380 zone. Okay, and the last candle is also a hammer candle, which is also good near to support 40. Momentum is also supporting. So overall sideways, stock is in a sideways on a medium term time frame, and on a support level it is bouncing back, and the last candle is hammer reversal candle. So expecting some more good upside move because of these shadows and this last hammer candle, and RSI is near to support zone. So near to 40 support zone. Okay, that's a one good sign. So now let me convert to the daily time frame. And if you can see daily time frame, we have seen a good uptrend, then sideways, then some downside move, and again sideways. So overall, we have seen a good sideways momentum still, and the resistance upside is around 425. The highest high is 427 here. Okay, so overall 430 area, we call it, it's a resistance zone for IGL. So I mark here 430 is a resistance. So let's analyze with price also here. So I'm removing this Bollinger Band also again, and just the simple stock price chart with only candlestick and volume. Okay, and we have seen a good this is a spinning candle with good volumes, and it's a reversal candle, and then we have seen a good downside move from the top. And now again stock is near to its conjunction of so many support here. Here we have seen. So first of all, the swing support is intact here, and while we have seen a good candle here, the with gap of opening, and this is a hammer candle at support, but importantly we have seen again one more shooting star at support zone. So I just mentioned in beginning of this video about the monthly time frame also, it has formed this kind of candlestick on a support level, which is a good sign. On a daily chart also it is forming this kind of candlestick at support level, which means this bottom has been almost sealed here. So we expecting some kind of bounce back in this counter, and the risk to reward ratio will be also in favor because we are near to support zone and the support is intact. We call it because this is a gap up opening, and the hammer candlestick at the support has been formed again. So, and one more thing, the RSI is also near to taking support 40, which is a good sign again. So these are the things you need to confirm if you are only using candlestick. In this analysis, we have only used the candlestick pattern and support resistance to identify and proper probability higher trade in Indraprastha Gas, IGL. Okay. And for confirmation, we have used Fibonacci on a monthly time frame, which further confirms our area of support is more strong because of the moving average support, and the Fibonacci ratio also comes at that place. Same way, on a daily time frame, we have seen two reversal candlestick pattern on the support zone. So the probability is very much high in this counter that we may gain some kind of pullback in this counter. So right now stock is trading around 401 zone, and the important area of support which comes around 375, 374. So I'm going to mark 374 as my stop loss for this counter. Okay, and the stock price is near 401, expecting a 430 level here, and if it crosses this level we may extend this rally up to
455. So these are the two levels. So you can be in your watch list for few trading sessions or maybe a couple of weeks. And I want to give some disclaimer here. This is not a buy and sell recommendation. This video is just for educational purpose of technical analysis tools and theories. So make sure you are the responsible for any kind of profit and loss. Okay, so we have seen a good support zone intact on a monthly, weekly, and daily time frame. Daily time frame also suggesting good signals with a reversal candlestick pattern. So in this video, we have just analyzing the stock with the help of only candlesticks and support and resistance. So you can also do the short to medium term trading with the help of support and the candlestick, support, resistance, and candlestick. So ultimately price is supreme in market, and we have not used so many indicator in this type of analysis. We are going to check, maybe this counter will give you some good momentum on upside in couple of days. So keep this stock in your watch list for next few days. So let's meet on outer video. आप सबने ये वीडियो पूरा देख लिया। जो IGL में हमने डिटेल में देखा, लाइक मंथली चार्ट पे कुछ ऐसे रिवर्सल कैंडल सिग्नल्स मिले थे। इंपॉर्टेंटली हमने उसको कंफर्म भी किया विद द फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑल्सो। और हमने देखा वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे कपल ऑफ ऐसे सिग्नल्स थे जहाँ पे हमने देखा सिर्फ कैंडल स्टिक से ही हमको आइडिया आ रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक, एक प्रोबेबिलिटी है कि रिवर्सल हो सकता है स्टॉक के अंदर, जो हम देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर और नेक्स्ट वीक के अंदर। तो जो भी हमने इंडिकेटर यूज़ किए, नेसेसरी नहीं है कि उसको आप यूज़ करो ही करो, बट इंपॉर्टेंटली जो प्राइस वाइज जो एनालिसिस किया उसमें से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड वेट फॉर माय अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।